Sir, can you zoom? So this is what we are learning today. Errors. कितना zoom करवाना है तुम? Sir, that absolute error is equal to delta A कुछ तो लिखा है ना, वो नहीं दिख रहा है. All of you are not able to see this. ये तो बहुत बड़ा font है, ऐसे कैसे नहीं दिख उसके बाजू में तो Then डेल्टा we can है. see, sir. है? Yes, sir. We can see, sir. Sir, under absolute error is something else, no, sir? Under absolute error, That delta A I something. cap. That delta I A subscript में I है वो. That is I. And हाँ, above वो is छोटा equal हो. to A के ऊपर क्या है? बार है बार. हाँ. वो मीन वैल्यू लिखा है, देखो ए बार लिखा है ना, देन मीन वैल्यू ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1 बाई n. अच्छा रुको, आई जस्ट मैग्नीफाई इट. ये देखो, अब देखो, अब दिखेगा. अभी दिख रहा है? Sir. ओके, लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा, फटाफट. Sir, हम्म can you do somewhat up? हम्म Okay, sir. वर्क्स फॉर यू. Sir, थोड़ा नीचे नोटेड. लो. नोटेड ऑल ऑफ यू. Sir, sir, mean absolute. Thank you, sir. It was much needed, sir. Done, sir. Wait, sir. Wait, sir, please. Sir. Sir, that 1 by n sigma after that delta A I दिया है कि A1 दिया है? आई होगा, आई. ठीक. आई पे सिग्मा लगाएंगे ना. Yes. Done, sir. Done, sir. Don't, sir. Okay, all of you noted it. Sir, I'm writing percentage. Sir, I'm also writing. बात कम करो, जल्दी लिखो बेटा, फटाफट. Okay, All sir. of you, write it quickly. Done, sir. Mm-hmm.
Done, sir. सर आज क्लास में क्वेश्चंस करेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी इसको इसी को पढ़ेंगे। अभी ये जितना पढ़ाया है ना तुमको, ये भी करना है अभी। ओके सर। Done, sir. सर हम्म वो आपने ए के ऊपर बार क्यों लगाया है? मीन वैल्यू है, उसको मीन वैल्यू को ऐसे नोटेशन देते हैं। ओ ओके ओके, आई थैंक होप यू। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट Sir, last. क्विकली। चलो अब सुनो मेरी बात फटाफट, ठीक है। सो what is error? Error is deviation of a measured value from the real value or true value, we call it, right? Systematic errors, there are different types of errors. Majority types because of इसको क्या बोलना चाहिए, चलो अभी टाइप्स ऑफ एरर बोल के खत्म करो। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर categorized under these two categories: systematic errors and random errors, right? Systematic errors can occur because of faulty instruments. For I have already given you example of a faulty weighing machine, right? By human errors, I've already given you example of a person who is not able to see, or whose vision is not perfect, right? So he can use specs to rectify his vision and hence cannot commit an error, right? So by unstable environment, right? Suppose a scale is so there is a steel scale, and yes, so so that is what is unstable environment, and it can be controlled by controlling all this, right? Random error, I've already explained it to you, so no worries, nothing to be discussed here. Least count error. So in the last class, we have discussed about least count of vernier calipers and screw gauge, right? And I told you about which value you can measure using a meter scale, which value you cannot measure using a meter scale, right? You remember or not? For example, you can see here in, for example, you can see here in vernier calipers, the reading is 3.98. We cannot go beyond that. In meter scale, the reading is 3.9 and 4.0 centimeter, because here the least count is 0.1 centimeter. Here the least count is 0.01 centimeter, right? Here the least count is 0.1 centimeter. Here in a micrometer screw gauge, the least count is 0.01 centimeter. Pranav, I'll send you the recording. I missed your message. Okay, don't worry. Yes, sir. This is, you can understand. So least count error is normally, if there is an error in least count, we call it, it's usually given as half of the least count. This is just an info for you, nothing more than that. Always you have to memorize it. Okay? We have already done this least count error. Now comes absolute error. So what is absolute error? Now, as it is said that random errors can be minimized by taking several readings. Okay, please pay attention, all of you. What happens is, suppose we want to measure the time period of a simple pendulum. I repeat, we have to measure the time period of a simple pendulum. Probably if, say, 10 different people are taking one reading, right? There is a possibility that everyone might get a different reading. It can vary by, suppose we are using a stopwatch, it may vary by, say, for example, 1 second or 2 seconds, right? Suppose that the time period of simple pendulum is 20 seconds for someone, it's 10 seconds for someone. Sorry, not 10, not this kind of error cannot be there. If it is 20 seconds for someone, it can be 19 seconds for some other person, 21 seconds for some other person, 18 seconds for some other person, right? So that's why, to minimize that error, what we do is we calculate the mean value of the readings.
ठीक है. So for that we have to take at least 10 to 20 readings. That works well. ठीक है. So to calculate absolute error, what we do is we take n readings of a value, right? Then we take the mean value of those values. So I'll just give you one example. So we are discussing absolute error. ठीक है. आ जाओ बच्चों, देखो बेटा सब लोग ध्यान से. Suppose I have these many number of readings, A1, A2, A3 up to, let's say we have n number of readings. ठीक है. So first is we will calculate the mean value. Mean value is denoted like this. All of you have written it, so I am not mentioning it. This is the mean value. Okay. आन्या समझ आ रहा है बेटा? आन्या शर्मा. Yes, sir. हाँ, ध्यान Yes, से sir. तुमसे सवाल पूछेंगे अभी, ध्यान से रहो सब. ठीक है. All of you please pay attention. So A bar is given as, it is sum of all these values divided by number of readings. N number of readings are there. In short, it is written as, I have taught you this thing about in integration, how to write summation sign. So I is equal to 1 to n, and this is A subscript में I. Okay, this is how we write the mean value. Now to calculate absolute error for each reading, we calculate absolute error for each reading. For example, absolute error for A1 is A bar minus A1 value, and this is delta A1, right? For A2 reading, the absolute error is A bar minus A2. This is delta A2. For A3, it is A bar minus A3. This is delta A3. So in this way, we go up to n readings. Sir, ठीक है. हाँ. sir, before the sigma sign, there should be 1 by n, right? Yes. Thank you so much, Jagan. So this is an. Okay. And this is A bar minus an, and this is equal to delta an. I hope all of you understood what is absolute error here. Yes or no? Yes, sir. Yes, This sir. is absolute error. This is absolute error for every reading. It can be negative, it can be positive. It can be negative, it can be positive. Understood, all of you? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो पूछो. As I said, it can be negative, it can be positive. For example, I'll give you one example also. Suppose there are these three readings. I'm just discussing these three readings, okay? 1.2 नहीं, इतना और आसान. 1 नहीं. Let's say it is 99, 100, 98. ठीक है. What will be average of this? Average of this is 99. Yes or no? This is A1. This Yes, is sir. A. This is A3. Average of this is A bar is 99. You add all these and divide it by 3, you get the A bar. What about delta A1? Delta A1 is 99 minus 99, it becomes 0. Delta A2 is 99 minus 100, it is minus 1. Delta A3 is 99 minus 8, it is plus 1. I hope all of you understood this. Yes. Yes. All of you say yes or no. Don't sleep. Sir? Ah, Yes, yes. sir. Yes. How is the average of 99, 100 and 98, 99, sir? नहीं होता है क्या? Is it not? You have to add it and By divide it by 3. So this is 297 upon 3. 3 nines are 3 nines are. Okay, sir. I think
I thought you did any simple method. It's a simple method only. I'll give 1 to this. All 99, all will become 99. So average value is 99. Understood. ठीक है, आन्या समझ आ रहा है कि नहीं? So Yes. now once we know about absolute errors, right? These are absolute errors. It's time to learn about what are mean errors. Okay. So mean absolute error. Please pay attention. What we do is, now to calculate mean absolute error, what we do is we take absolute values of all these errors. ठीक है? We take absolute values. Errors are never subtracted. Always remember this. So this is delta AN, right? This is divided by n. So we take absolute value of each of these absolute errors, and then we add all these errors divided by n, we get mean absolute error, which is mod of A bar. This is, in short, we can write it as sigma I is equal to 1 to n mod of delta AI divided by n. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. So in our example, Yes, sir. in our this example, what we will do is mod of delta A1 is 0, mod of delta A2 is 1, 1, mod of delta A3 is 1. 1. Now, what about mean error? Delta A Sir, bar is A2 is, sir, delta A2 is -1. so delta A2 is -1, but mod of that is mod sign. When you put a mod sign, it becomes +1. Okay. You know about modulus sign or not? Yes, sir. So modulus sign will make -1 as 1. So it is 2/3. ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है सबको? हाँ ना Sir, बोलेंगे where नहीं did तो 2 by 3 come from? अरे यार मतलब काट, इतना तुमको सबको ऐड करेगी ना बेटा, 0 +1 +1, अरे यार ये अनपढ़ टाइप बात मत किया। Oh. छी छी छी। Sir, सर हाँ सर डाउट है सर बोलो। आपने वो मीन लेकर माइनस क्यों किया सर? कहाँ मीन लेके माइनस किया? किसको माइनस किया? वो ए रेस टू ये एन। ये हाँ हाँ। अरे ये प्रोसेस है भाई, उसका तरीका है बेटा एब्सोल्यूट एरर निकालने। ओ ओके, एब्सोल्यूट तो एरर यहाँ पे इज हर एक डेटा का, एवरी डेटा विल हैव इट्स ओन एब्सोल्यूट एरर, एवरी ओके रीडिंग. So what we do here is we subtract ओके। the reading from the mean value. We get हम्म the absolute error for that particular reading. हम्म। This is the method. मैं कुछ नहीं कर सर रहा हूँ मुझे इसमें। लगा कि वो ए नहीं टू नहीं, कोई माइनस कोई कुछ होगा। जादू नहीं है इसमें। ठीक है ना? ऐसा सर होता है, ऐसा ये इसको ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है? ओके ओके, फॉर्मूला ही है ऐसे। हम्म. So now ओके सर, थैंक this is the mean value. This is the mean value. This is the mean absolute error. Now the final reading of A bar plus minus delta A bar. We take this allowance in either of the directions. It can be positive, it can be negative. So in our example, the value of A will be what? It will be value of A bar plus minus delta A bar, sorry. So this is what? This is 99 plus minus 2/3. So the final reading can be 99 plus 2/3 also. It can be minus 2/3. So we get a range of the reading. Whenever there is an error, it is calculated in either of the direction. It is taken into account in either of the directions, right? It can be positive, it can be negative. So there is a range which is given. So that whenever you are devising or whenever you are designing an instrument for reading that particular parameter, you should keep into account that yes, the reading, when we are measuring this reading from this particular instrument, or we have to keep this kind of range. समझ आया? Yes, sir. yes, sir. लिखो इसको. अच्छा, ये तो लिख लिया है ना आप लोगों ने? You need Yes, not have to sir. write it again.
Anybody is having any doubt in this? Please ask if you have any doubts. सर मुझे डाउट है हाँ पूछो। सर। वो डेल्टा ए बार मुझे समझ में नहीं है, वो क्या है सर डेल्टा ए बार? बेटा वो मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू नहीं निकालना सीखा बचपन से अभी तक? एक बार भी हाँ नहीं सीखा सीखा? है, सीखा है। तुमको तुम्हारे पिताजी ने रोज 100 रुपए दिए, ठीक है? हाँ किसी पर उन्होंने तुम्हें 10 दिन 100 रुपए दिए, महीने में हाँ 10 दिन 200 रुपए दिए, और हाँ। बाकी 10 दिन दिए तुम्हें 300 रुपए। तो तुम्हारे हम्म। पिताजी ने तुम्हें एवरेज कितने रुपए दिए प्रतिदिन, कैसे निकाल सकते हो तुम? 300 प्लस 200 प्लस 100/3। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। 300 × 10 प्लस 200 × 10 प्लस ओह हंड्रेड ओके। इंटू टेन डिवाइडेड बाई 30। 30, ऐसे हाँ हाँ निकालते हैं एवरेज, ऐसे निकालते हैं एवरेज। हाँ हाँ हाँ। और क्या निकाला यहाँ? ओके। अच्छा, तो डेल्टा तो डेल्टा सर यहाँ पे कैसे आया? अरे डेल्टा इज डिविएशन फ्रॉम दैट मीन वैल्यू। अच्छा ओके डेल्टा क्या ओके। होता है? चेंज होता है, चेंज। हाँ चेंज हाँ पढ़ाया है हाँ ना डेल्टा? हाँ हाँ हाँ। पढ़ा है। डिफरेंशिएशन में चेंज पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? यस, यस पढ़ा है। पढ़ाया है ना? तो हाँ। अब जब डिफरेंशिएशन में चेंज पढ़ाया है तो हे प्रभु, यहाँ पर भी वही चेंज हो रहा है। ओ मीन वैल्यू ओके। से कितना आगे गया, कितना पीछे गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ओके मान ओके। लो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें, कितना होगा एवरेज इसका? 300, 3000, 2000 प्लस 1000, कितना हो गया? 6000 डिवाइडेड बाई 30 1000। करो, 200 रुपया। 200। तो एवरेज हो गया 200 रुपया। तो अब हाँ। पहले 10 दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एवरेज से 100 रुपए कम दिए, अगले दस हम्म दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एवरेज वैल्यू दिए, अगले दस हम्म। दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एवरेज से सौ एवरेज से रुपए 100 रुपए ज्यादा दिए। वही वही निकाल रहे हैं यार, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A। ओ ओ, पैसा अच्छा अच्छा। तुरंत समझ में आता है नीलाभ बाबू, हाँ, है? सर। नहीं पैसा सर, तुरंत समझ में आ रहा है। कुछ नहीं। Sir, हाँ। I can't understand अरे one bit also, sir. नो नो, You're डोंट talking, अंडरस्टैंड इट। you're talking so नो नो fastly, sir, in Hindi. नो 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 नो, इट्स नॉट, इट वाज अबाउट हिम। मतलब आई वाज स्कोल्डिंग हिम, सो व्हाई डू यू वांट टू हियर दैट, व्हाट आई एम स्कोल्डिंग? ठीक है? You have any doubts, Adya, in this? Anybody, any one of you is having No, any sir. doubts in this who is not able to understand it? Please ask. मिशिका, डाउट्स है बेटी कोई? है? No, sir. नहीं है? मिस्टर जगन्नाथ, एनी डाउट्स? No, sir. अरे आज वो कहाँ है? धीरेन, धीरेन, धीरेन। ये लड़का कभी आता है कभी नहीं आता है, बहुत ही खराब। Coaching, विहान I तोले, think, sir. विहान तोले, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तुम कहाँ श्रीलंका से बैठ के देख रहे हो इसको? Sir, I'm here only. अच्छा, ठीक है, चलो। सो दिस वाज अबाउट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नाउ कम्स रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं है ये तुम्हारे, ठीक है ना? ये दीज आर नॉट योर रिलेटिव्स, दिस इज रिलेटिव इज with respect to. So relative error is given as delta A upon A, right? Delta A bar upon A bar, if we want to calculate it like this. So whenever we have a final reading for, we had this final reading for A as A bar plus minus delta A bar, right? So in this case, if I want to find what is relative error, it's the error divided by the main value. ठीक है? Now there is this percentage error. Percentage error is nothing but relative error multiplied by 100 value. This gives me the percentage error, right? For example, suppose delta A bar is, for example, suppose delta A bar is 0.2. A bar is, A bar is say 2, right? So what is relative error? 0.2 upon 2, which is 0.1. Okay. What about percentage? So 0.1 multiplied by 100. So this gives us 10%. This is the value. So you can write this example. Suppose in case you want the clarification about it, explanation Sir, about it, please write it. Yeah, this 10% represents the 10% of deviation from the real value. obviously, yes. Okay.
लिखा है ना वहां पे 2 + -0.2, लिखेगी कि नहीं लिखेगी बता। अच्छा, Yes. अरे जो समझ में आता है उसको थोड़ी जबरदस्ती। 2 + -0.2 लिखा ना। सो द रेंज ऑफ ए इज, द वैल्यू ऑफ ए विल लाई इन बिटवीन 1.8, 1.8 टू 2.2, इस बीच में वैल्यू ऑफ दिस लाइज। समझ आया? सबको हाँ ना बोलेंगे भाई जल्दी से सब। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. लिखिए, यस राइट इट सर। क्विकली, ऑल ऑफ यू। सर कैन यू वंस अगेन एक्सप्लेन रिलेटिव एरर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। रिलेटिव एरर इज मीन वैल्यू, एरर का वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, बस। ओके। ठीक है बेटा। Sir, didn't we already note this, like relative and percentage error? एग्जाम्पल 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 लिख ले बेटा, एग्जाम्पल लिख ले, स्याही खत्म नहीं होगी तेरी, जल्दी लिख, पेज मत बचा, कंजूसी मत किया कर, समझा? Done. Yes, sir. Sir, यस। how many classes will you have every day? I teach close to 4 to 5 hours. Now I am teaching too much. This was since last 2 years I was not taking much classes. This year why I'm doing it I don't know, but this year I'm teaching more. Sir, सर you आप are कहाँ पे doing it. पढ़ाते हो सर? क्या आप क्या? कहाँ आप कहाँ पे पढ़ाते हो मुंबई में? मैं कहीं नहीं और पढ़ाता हूँ, मैं अपने घर से पढ़ाता अच्छा, हूँ, वही ऑनलाइन। मतलब जैसे जाता ही नहीं, निकलना ही नहीं। सर आप मलाड में रहते हो ना? हाँ। सर मैं चलो आ लिख रहा हूँ सर। लिया, जब आएगा मुझे बताना। हाँ आपसे मिल लूंगा सर। बोरिवली ईस्ट मालूम है? हाँ हाँ, उधर। अच्छा, चलो डन, आगे चले हम लोग। यस सर। Shall we move ahead, all of you? Adya, Yes, sir. noted, Yes. noted. Jagannath, Ishan, Yes, sir, noted. Yes, okay, sir. Isha, Anya, Yes, sir. Abhikya, Yes, Vihan. sir. Okay, good, good. So now let's go ahead with, um, okay, propagation of errors. Right. Now, remember, this is interesting, huh? Suppose you measure I'll give you an example of how the error is propagated. Suppose you measured the length of the rectangle, okay, by using a faulty instrument. And you also measure the breadth of the rectangle by using the same instrument. And in measuring the length and the breadth, there is a error of 10%. Okay. Now, when you find area, what is area of rectangle? It's length into breadth. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So when you find area, that error in length, it is length into breadth. So that 10% error will be propagated to area also. In maths, you must have experienced it. If you commit a mistake at somewhere in second step, so till last step, that error goes. Yes or no? Yes. Yes, है ना? sir. That is what is Yes. called as, Yes, sir. that is a Yes, sir. simple example of propagation of error. So error is propagated. ठीक है? तुम्हारी गलती, हिंदी में बोलता हूँ, तुम्हारी गलती कम नहीं होगी, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? So that is what is, error is always propagated. ठीक है? So we are discussing propagation of errors. Sir, once in my math exam, I wrote the one number wrong. I didn't write one number. When the entire step got wrong, I had to cut the whole page 3 times and then redo it. That is what is propagation. Finally, I got it right, but that's it. Very good. Sir, So, my 3 marks got cut because of not writing 2 numbers after decimal place. so here we have x and y. Value of x is, we have measured it, and this is the final value of x plus minus delta x, and value of y is y plus minus delta y. Now,
propagation of errors, we have these two values. Now propagation in addition of, first one is addition in adding these two values, right? So while if we want to add these two values, this is vector, sorry, vector bol raha hu. Value A is x plus y. So what we do here is we will add the main values. We will add the main values plus minus delta x plus delta y. Then errors are also added, and this is value of A. So this is nothing but small a, and this one is the error in the value of A. That is how error is propagated while adding two faulty readings. I hope all of you understood this. Yes, sir. Now, remember, in propagation of errors, I'll mention this at the top only, and you have to remember it, right? Memorize it. This is the main statement here. Errors are never subtracted. Errors को हम subtract नहीं करके लिखते हैं, ठीक है? Because it's an error. It's an unpredictable thing which can occur, right? So we cannot reduce it. उसका maximum allowance लेके करना है. We have to take the maximum allowance, right? Now, Doubt, sir. रुक जा भी. In subtraction. Subtraction में क्या होगा? Subtraction में होगा, in subtraction, we have this value b. So it is x minus y. So small b is x minus y. Delta b is delta x. I have already told you it cannot be subtracted. So it is delta x plus delta y. Okay. So capital B is x minus y plus minus delta x plus delta y. I hope this all of you understood. बोलो क्या बोल रही हो कृषा तू? Sir, but in systematic errors, there will be only one kind of error, so we can subtract it. कुछ भी बोलेगी? Sir, because in weighing machine, you कैसे? told, अच्छा एक बात बता बेटा, कैसे तूने बोला सिस्टमैटिक एरर्स में? व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब मैं समझा ही नहीं तुम्हारी बात. मतलब जैसे weighing machine में तुम माइनस, स्टेटमेंट पढ़ो, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रही हो? विच मतलब हम स्टेटमेंट लोग यू आर टॉकिंग अबाउट? उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हाँ, नहीं करना है. एरर्स विल नेवर बी सब्ट्रैक्टेड. फॉर ठीक है. एग्जाम्पल, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ये दोनों एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ये मॉड्यूलस निकाला इनका, फिर उनको ऐड करके ही लिखा ना. दैट इज व्हाट आई मेंट टू से. लेकिन सिस्टमैटिक एरर में तो एक ही काइंड ऑफ एरर होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी. तो क्या हुआ? ऐड ही तो हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हुआ वहां पे. नहीं सर. फिर तो जो बोला है वो मानो ना, उसको खत्म करो. उसमें क्या है जबरदस्ती पंचायत लेके बैठना है? वहां तो होता ही नहीं है, माइनस करेंगे क्यों? अरे भैया, जब सबको प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही करके लिखेंगे ना. हाँ तो सर. प्लस वाले को जबरदस्ती माइनस करने लगेंगे बेटा? नहीं सर. जबरदस्ती मतलब चीते को, भैंस को देख के ये भैंसा है, भैंसा है, 5 बार बंद हाँ है. सर. हाँ, बहुत तुम पकाती हो भाई. चलो लिखो इसको जल्दी से. टाइम नहीं है यहाँ, 9 बजने वाला है. बहुत सारा पढ़ाना है, जल्दी लिखो. Sir, काम done. भी तो देना. डन? ऑल ऑफ यू नोटेड इट? No, नो sir. सर. No, sir. Yes, sir. हम्म. Done, sir. रुको जरा, अभी क्लास थोड़ी आगे बढ़ाई गई. 9:15 की है. ठीक है. ऑल ऑफ यू नोटेड इट? जगन्नाथ, नो No, सर. sir. मिशिका, नीलाभ, विहान, कृषा. No, sir. No, sir. सर. लिखो लिखो. सर 1 Right. minute सर.
Sir, Hmm. now I am remembering one thing, sir. What? When I want to talk in Hindi with my friends in Hindi period, and I am saying, I want to say, keep a finger on your mouth, and I am saying, मुंह में उंगली लगाओ. All are saying me like this. I can't understand. I told correctly, why are they saying me? Afterwards, one girl told me, मुंह पे उंगली लगाओ. I was So, shocked, sir. see, it's good that you are trying to learn, है ना? But you should always take it on a lighter note only, huh? Don't think that they are making fun of you or they are criticizing you. Don't do it. Don't think it like that. It's always good to learn a new language because every time when you are learning a new language, your gray cells of your brain are increasing. Done. Sir, in my school, So, everybody talks only Kannada. I don't understand anything. no worries. So what? Sir, gray marker But is bad for us. no. No? Noted? All of you noted this? Gray cells. No, sir. Yes, sir. Yes, sir, noted. Yes. ओके ओके ख्याति अंडरस्टूड बेटा आ रहा है समझ में तुम कुछ बोलती नहीं हो क्लास में चुपचाप बैठी रहती हो मुस्कुराती रहती हो बस अच्छा अच्छा है दिस इज गुड बट समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ ना बोलना है Yes, sir. शाबाश सो द लास्ट वन इज नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट वन इज सो वी डिड एडिशन वी डिड सब्ट्रैक्शन द नेक्स्ट वन इज इन मल्टीप्लिकेशन राइट नाउ हियर comes the knowledge of your calculus okay इन मल्टीप्लिकेशन देखो ध्यान से सुनो डी बाई डी एक्स ऑफ ln of x क्या होता है इट्स 1/x राइट Yes, sir. so d of ln of x is equal to d of x upon x this is what you should remember we can simply take this dx here ठीक है at later stage when you learn calculus in maths नहीं भी कुछ नहीं बोलता मैं फालतू क्यों उसको अभी लेके आना है ठीक है so this is how d of ln of x is written d of ln of x is we are seeking a change in ln of x only and that is given as dx upon x so d of ln of y will be dy upon y okay d of ln of z will be ln d of z upon z right so this is how we can write d of any function right so that is we are seeking a change in value of ln of x and this is how we can write now we have our two friends here capital X is x plus minus delta x and capital Y is y plus minus delta y okay now we have capital C as x into y so small c will be x into y now our objective is to find small delta small c right तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पर ln of c is equal to ln of x into y yes What is C? c is x multiplied by y That is a statement, sir. no these are two values and we want to take the product the product of these two values is capital C so this capital C will have two values the main value and the error value right so this main value is given as small x into small y to find delta C we want this is the process which we are doing got it so ln of C I have already taught you the properties of log if you remember ln of x into y is equal to ln of x plus ln of y याद है बेटा सबको ये all of you remember it Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ
So similarly, ln of c is ln of x into y. We are taking log of this value, right? Now, if I write d, why I'm writing, I'll tell you. If I write d, this is equal to d of ln of x plus ln of y, because ln of x into y is nothing but ln of x plus ln of y. Yes or no, all of you? Yes. Yes, sir. Yes, Hmm? sir. तो यहाँ पे, so we can write it individually also. What's it? d of ln of x plus d of ln of y. नीलाभ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, वो थोड़े ईशान, लास्ट प्रणव, उस टाइम नहीं समझ में। Yes, sir. क्या नहीं समझ में आया? इसको डी बस तो लिखना है, डी सब जगह लगाना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इस पे डी ओके। लगेगा, इस पे डी लगेगा, सब जगह लगेगा। तो d अच्छा of अच्छा, ln of c will be what? Using this, we can write d of ln of c as dc upon c is equal to dx upon x plus dy upon y. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Sir. Now remember, limit delta x tends to 0 is written as dx. Yes or no? We have learned this in differentiation. Yes, sir. Yes, sir. Right? So here also, now this error is for a quite large value. आन्या समझ आ रहा है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है तुमको तो पूछो इसमें। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर dc by c is, we can write it, since dc is the change in the value of c only for when delta c is tends to 0. For bigger values, we can write the change to be delta c. So from here we can write dc as delta c by c is equal to delta x by x plus delta y by y, right? So delta c is error in c. Yes or no? This is delta c. This is equal to c multiplied by relative error in x plus relative error in y. ठीक है? Now what is c? We have already found c as x into y. So this is x into y, delta x upon x plus delta y upon y. This is what is delta c is. I hope all of you understood this. Understood, sir. Now, so capital C is what? Capital C is small x into y plus minus small x into small y multiplied by delta x upon x plus delta y upon y. This is how we calculate propagation of errors while multiplying two erratic values. Sir, Hmm. why do we take that D you told you will tell? क्या डीसी? That मैंने बोला था डीसी को डेल्टा सी क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा। अरे डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि चेंज कैसे देखेंगे? चेंज देखने का एक ही तरीका है, डिफरेंशिएट करना। सिखाया था ना डिफरेंशिएशन हाँ में हाँ क्यों करते हैं? हाँ सर। तो इट इज चेंज ओनली ना, अच्छा, दैट तो इज व्हाट that's वी आर why. सेइंग। हाँ, चेंज ही तो, चेंज इज एरर ओनली ना, डिविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज एरर। हाँ, yes sir. So how much it can deviate, so this is how we calculate it. All of you please write it quickly if you Understood. have understood it. If you have not, please ask whichever step you are facing difficulty, I'll explain. Khyati, understood? Yes, sir. Okay. Mishika, you? Yes. Okay. Sir? Hmm. You know how many languages? I know 3 languages. Yes, sir. I also know 3 languages. I also know 3 languages. अभी क्या उत्तराखंड में तुम उत्तराखंड से हो ना? सर कहाँ से हो उत्तराखंड में? सर कुमाऊं, चंपावत। यस सर। चंपावत से हो। चंपावत में लैंग्वेज कौन सी है बेटा? पहाड़ी अलग लैंग्वेज सर चलती है क्या पहाड़ी तुम्हारे? कुमाऊनी लोकल डायलेक्ट? लाइक
Sir, it depends on the region. Like there are different हाँ districts. डायलेक्ट, We हाँ speak डायलेक्ट। Kumaoni, but there are different Kumaunis also. अच्छा, तो वेरिएशन है। Yes, हाँ sir. Sir, you know English, Hindi, and छत्तीसगढ़ी। Wow. you learned us. नहीं नहीं, आई एम छत्तीसगढ़ी, नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़, सो देयर इज अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। Sir, that is where. Sir, छत्तीसगढ़ I इज also know 5 languages, but I only know one. चलो लिखा ये, नोटेड और नॉट? Please wait, sir. Noted. Sir. Noted. ठीक है, ठीक है। छह मिनट और है, पढ़ा दूं क्या डिवीजन भी? जल्दी लिखो ना, फिर डिवीजन भी पढ़ाता हूँ। Done, sir. डन? Wait, ठीक sir, है। I'm taking a screenshot. क्यों? व्हाई यू आर नॉट रिटन? है विहान, व्हाई यू हैव नॉट रिटन? Sir, I am writing. लिखो लिखो तो लिखो, फिर नो वरीज, लिखो। Sir, I've taken a screenshot. नहीं नहीं, लिखो तो लिखो, विल लर्न डिवीजन नेक्स्ट क्लास, नो वरीज। Sir, I can wait for extra time. I have no problem. क्या क्या बेटा? सर आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी पढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मेरी एक क्लास है अभी, वो ऑलरेडी 9 o'clock को थी, 9:15 किया। वो बच्चे लोग भी, उनको कल स्कूल, वो बड़े बच्चे हैं ठीक है, वैसे sir. तो, बट ऑल ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड। वो बहुत टेंशन होता है मुझे उनको बेचारों को 10:30 11 बजे तक पढ़ाने। मैं तो पढ़ा लेता हूँ, वो बेचारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। एनीवेज, सो नाउ नाउ you have this in concepts of physics HC1, okay? I'll tell you where it is. तो मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट चैप्टर में ही होगा ये, एरर्स में ही, ठीक है? या नहीं है क्या इसमें? यूजेस और डायमेंशंस, एरर्स नहीं है यार, इसमें नहीं है। एक मिनट, इसमें है क्या? वेक्टर वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट कैल, हाँ ये देखो एरर्स है, पर यहाँ पे भी नहीं है वो सब, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स वगैरह छोड़ दो, मत करो। ये पढ़ लेना बेटा एक बार, एरर्स इन मेजरमेंट्स जो है ना यहाँ पे, दिस इज इन सेकेंड चैप्टर, सो जस्ट रीड इट। वी नेक्स्ट क्लास वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर, ओके? सो नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंक्लूड इट, ठीक है? And then we will do kinematics. ठीक है। Sir, must तो आई chapter. आई नहीं नहीं, सब मस्त है इसमें, अब तो मजा आएगा तुमको फिजिक्स पढ़ने में, ठीक सर है? वो आई, इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस मस्त है। हाँ, so I'll take your leave, I have a class to take, ठीक है? Bye, good night। Sir, bye, sir. सर व्हाट हाँ अबाउट जल्दी, Bye, मैक्सिमा एंड sir. मिनिमम? Sir, Thank when you, you sir. will sleep, sir? सॉरी सॉरी, When you will sleep, sir? 11:30 और 12 Well, o'clock। that's the same time I sleep. यस Same, sir. सर। Sir, I'll sleep at 11, sir. Correct. हाँ सर सो जाया आई करो, स्लीप एट जल्दी सो जाया 12। करो। sir, do we have Bye. calculus tomorrow? डू यू हैव Yes, sir. कैलकुलस टेस्ट? तुम्हारा आईडी आएगा तो टेस्ट होगा ना। यू विल, व्हेन यू विल गेट योर आईडी, द टेस्ट इज ऑलरेडी, आई हैव जनरेटेड द टेस्ट वे बैक 10 days before, but unfortunately we were not able to provide you with the IDs. Yesterday we were facing, now I have to ask him, he was calling me for that one, Rakesh sir, ठीक सर है? व्हाट तो अबाउट I'll ask him, मैक्सिमा एंड मिनिमम? अभी रुक जा, बाय बाय। बाय Bye, सर। sir.